students, welcome once again to the web classes. So today we are going to start a new chapter. The name of chapter is Accounting for Non-Trading Concern for the 11th Standard English Medium. This is unit number 9 of part 2. So before we come to the chapter, let me ask you one thing. What do you mean by non-trading concern? See, non-trading concern, what do you mean by trading? So trading means simply purchase and sale kind of activity. When someone is involved in purchase and sale of goods, okay, what? Purchase and sale of what? Goods. Then that concern or that business is known as trading business, okay? And when any business is engaged in not purchase and sale kind of activity, means if they are providing services, so that is called non-trading concern. Clear? Non-trading concern like schools, okay, so schools are non-trading concern. Then gym are non-trading concern. Hospitals are non-trading concern because they are not doing sales and purchase. So these are the institutions which provide services, and against the services they are charging fees or subscription or monthly fees or yearly fees. Like in gym, they are having yearly, quarterly and monthly subscription. In schools, they are having annual fees. In hospitals, as per the disease, है ना, जैसे रिक्वायरमेंट वैसे फीस, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न मानी जाती है. नाउ मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, आई एम रीडिंग द मीनिंग, जस्ट रीड इट विथ मी. कंसर्न विच आर नॉट हैविंग एन एम टू जनरेट प्रॉफिट बट हैविंग the aim of social service, welfare of member of concern, to protect the interests of the member, to extend academic and sports activity, to develop cultural activities are known as non-trading concern. For example, like Rajpath Club, Ahmedabad Gymkhana, Moneyben Library, Jivraj Mehta Hospital, etc. Okay. Now characteristics. So characteristic is service. First, the main motive of this kind of concerns are to provide service. Trading account, so they are not preparing trading account because they are not involved in the activity of purchase and sale. Income and expenditure account, so they are preparing income and expenditure account. Like in trading concern, we were preparing P&L account, okay? So similar to the P&L account, there is an account named income and expenditure account for the non-trading concern. Okay, this is prepared at the end of the year to know the profit or loss. Simply, receipt and payment account. Receipt and payment account is what? It's like a cash account. Okay, it's like what? A cash account. All the cash transactions are shown in this account. Balance sheet. So balance sheet, as you know, what balance sheet is. Now capital fund. What is capital fund? Like in trading concern, we were having capital. Okay, but in non-trading concern, we are giving the name of capital to capital fund. Capital fund means all the capital incomes are recorded in the capital fund, and if there is a surplus of income, means if there is a profit, that is also added to the capital fund. Now subscription. What is subscription? So whatever the yearly or monthly or quarterly charge we are taking from the customers or members, that is called subscription. Accounts of non-trading concern. So there are two methods of preparing: mercantile system and cash system. Mercantile system means जैसा कि हम ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बनाते थे, बिल्कुल वैसा ही है ना. मर्केंटाइल सिस्टम में हम जो है आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनको ध्यान में लेते हैं. कैश सिस्टम, तो कैश सिस्टम में ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं ली जाती. कैश में सिर्फ ये देखा जाता है कितना आया कितना गया. ओके, जो रियलाइज हुआ है सिर्फ उसी को ध्यान में लिया जाता है ना. देन difference between trading concern and non-trading concern. First,
Meaning and objective, the trading concern means the concern which are engaged in the production, purchase and sale kind of activity. Non-trading concern which have main motive out to provide service. Trading account, yes, they are preparing trading account, they are not preparing trading account. Method of disclosing result at the end of the year. So trading concern prepare profit and loss account to know the profitability, and non-trading concern prepare income and expenditure account to know the surplus or deficit. Okay. Identification of results. So trading concern either have net profit or net loss, and non-trading concern either have excess of income or excess of expenditure. मतलब same profit and loss. Source of income, so main source of income is sales, and here fees and subscription. Annual accounts, so in annual accounts we are preparing trading account, profit and loss account and balance sheet, and here income and expenditure account, receipt and payment account and balance sheet. Okay. Capital fund, so we are not having capital fund here. Yes, we have cash transaction. For cash transaction, cash book is prepared. For cash transaction, at the end of the year, receipt and payment account is prepared. So hopefully the difference between that two is clear to you. Now move further. Classification of income. So income can be broadly classified into two categories: capital income and revenue income. Capital income means the income which is not generated from routine activity of business. Okay. So capital income क्या क्या होता है? सिर्फ एन एग्जाम्पल, डोनेशन रिसीव, तो रोज़ रोज़ डोनेशन नहीं मिलता है ना, कभी कभी मिलता है. लेगेसी, लेगेसी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी इंस्टीट्यूशन के या फिर एनजीओ के नाम कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड लेगेसी. लाइफ मेंबरशिप फी और लाइफ सब्सक्रिप्शन, लोन बोरोड एटसेट्रा, तो दीज आर द कैपिटल इनकम. ओके. नाउ रेवेन्यू इनकम. रेवेन्यू इनकम मीन्स द इनकम विच इज जनरेटेड और अराइजिंग थ्रू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, है ना. बिजनेस मीन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यहाँ पर. नाउ सी रेवेन्यू इनकम लाइक एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर, fees, interest on investment, sale of old newspaper, income of entertainment program, rent income of sports ground, locker rent, rent of hall, income from amenities provided to the member, etc. So these revenues, these incomes are called revenue income. Hopefully it's clear. Then difference between capital income and revenue income. मीनिंग, तो मीनिंग जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, एंड ये रूटीन एक्टिविटी से जनरेट नहीं होता. ओके. वेल रेवेन्यू इनकम जो है वो रूटीन एक्टिविटी से जनरेट होता है, और दैट इज़ फॉर द शॉर्ट टाइम, नॉर्मली 1 ईयर. ऑब्जेक्टिव, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज़ टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म रेगुलर इनकम. प्रेजेंटेशन ऑफ इन अकाउंट्स, सो कैपिटल इनकम जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है, और जो रेवेन्यू इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में शो करता है. बैलेंसेस, एवरी ईयर द बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड और कैपिटल इनकम इज़ कैरी फॉरवर्ड, और ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्लोज करके ट्रांसफ़र कर देते हैं. इलस्ट्रेशन है इसके, जैसे कि लेगेसी, डोनेशन, स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, चैरिटी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ असेट एट्सेट्रा, और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, लॉकर एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर एट्सेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस. सिमिलरली एज वी हैड क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम बेस्ड ऑन द कैपिटल एंड रेवेन्यू, similarly we are having classification of expense, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंस. सो कैपिटल एक्सपेंस मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए जो एक्सपेंस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. तो कैपिटल एक्सपेंस कौन कौन से हैं? मीनिंग expense which is not incurred regularly and the benefit of which is available to the concern for longer period of time from which fixed assets are acquired by the concern is known as capital expense, like land and building, machinery, investment, books of library, x-ray machine, sports equipment, swimming pool, ये सब बनवाने का खर्चा. ठीक है. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंस. रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब रूटीन एक्सपेंस है ना, expenses which incurred on the regular basis to run the routine activity of concern and the benefit of which is available for the concern for the respective year only
It is known as revenue expense, like daily admin expense, salary, rent and taxes, postage expense, telephone expense, stationery, printing, entertainment, program expense, etc. Okay, so that's all for today. इसमें एक और आता है जो नहीं बताया मैंने शायद, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 2 या 3 साल के लिए मिलने वाला हो, है ना, तो वो एसेट साइड में शो किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको इस चैप्टर की थ्योरी लर्न करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।